ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗਾਈਘਾਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਖੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। श्री वाहिगुरु आप जी के चरणा कमलों में बेनती है सच्चे पातशाह इस पूरे विश्वव्यापी कोरोना महामारी में सच्चे पातशाह आप जी का मेहर सत्कार आसनसोल बरनपुर सिख वेलफेयर सोसाइटी जो कि सुरजीत सिंह मक्कड़ द्वारा बनाई गई सी सच्चे पातशाह उन्होंने उपराले नाल सारे इलाका मिर्सा कुमरडुबी तो लैके पानागढ़ बर्दवान आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी प्रबंधक कमेटी आप जी की इस महामारी की अपनी सेवा करके सारे इलाके की साथ संगत वो अपना फायदा दे रहे हैं। अपने सिख कौम के लिए आज 2 महीने तो 1 अप्रैल तो ही पूरे इलाके में अपने सिख संगत लिए ऑक्सीजन की सेवा या दवाई की सेवा या लंगर की सेवा या होर कोई भी किसी भी किस्म की तकलीफों में सच्चे पातशाह दुआ कमेटियां ने तन मन धन सेवा कर रहे हैं। आप जी चरणा की अरदास बेनती है सारे सेवादारों को मेहर भरे हाथ रखना, ऐसी तरह हुक्म बल बख्शना, अपनी सेवा करते रहे। पंख चढ़ दिया से अपने लोगों ने जान गंवाई है। इसमें हमारे सिख भाई ने लंगर लगा के जो आने वाले मजदूर थे जो 200 किलो के देश में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, लोगों को परेशानी बढ़ गई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी। उस समय भी सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ हमारे सिख भाई, हमारे गुरुद्वारा कमेटी आगे आई और जगह जगह लंगर का व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था की। दिल्ली में आपको मालूम होगा टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो इसी जगह में जो डेवलप्ड है वहाँ भी ऑक्सीजन से लोग मरने लगे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया। उसके बाद हमारे सिख भाइयों ने गुरुद्वारा में बोले सोनिया हमारे गुरुद्वारे में ऑक्सीजन। इसी तरह आज अप्रैल 1 से हमारे सिख वेलफेयर सोसाइटी और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि हमारे हर 3 साल में चुनाव होते हैं, जो इस बार चुनाव हुआ 23 गुरुद्वारों की सहमति से हमारे जगदीश सिंह जी संधू इस सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष बने और पूरे आउटर कलकत्ता, एक कलकत्ता में हमारी सेंट्रल कमेटी है, एक कलकत्ता से बाहर सारे गुरुद्वारे मिलकर सेंट्रल कमेटी का चयन करती है। उसमें सारे गुरुद्वारों में सर्वसम्मति से हमारे जगदीश सिंह जी संधू को चुना गया और उसके बाद वो लगातार हमारे इलाके में लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हुए। पिछले कुछ दिनों से हमारे ऑक्सीजन का बड़ा सिलेंडर ला के जिसको भी जरूरत पड़ता था उसको घर घर पहुंचाने का काम हमारे सिख वेलफेयर सोसाइटी के सुरजीत सिंह मक्कड़ जी ने किया है। उसके बाद जगह जगह लंगर की व्यवस्था हमारे मिर्सा गुरुद्वारा में पिछले दिनों कोरोना काल से जो संक्रमित थे उसके घर घर में हम लोगों ने भोजन बनाकर लंगर उन लोगों को घर घर पहुंचाया। एक डॉक्टर हमेशा 12 से 1 बजे दिन में रहते थे। ਬਹੁਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 2015 ਤੋਂ बहुत सेवा कर रही थी। कोविड-19 के महामारी में अगले साल भी बहुत सेवा की, सारे वीर ने अगले बड़ी सेवा की सी। मतलब साड़ी जी कमेटी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कोविड-19 की सेवा ਤੁਹਾਡੇ सहयोग ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਸਾਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਚੌਕੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ श्री राम सिंह जी आए हैं, उन्होंने बहुत ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ और संगत का बहुत धन्यवाद। हर साल आंदे भी ऐसे कहते हर काम से देना साड़ी सेंटर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक बेनती है किसी भी लोड़वंद गुरसिख परिवार में कोई चीज़ की लोड़ हो वो अपने प्रबंधक कमेटी को बोल दें, सानू मैसेज व्हाट्सएप कर दें, उन्होंने नाम गुप्त रखा जाएगा। जो भी लोग लोड़ है दवाई की कोविड रिलेटेड या होर भी परेशानी हो असी कोशिश करांगे कि दुख दूर कर सके, साझा कर सके, वंड सकीए, क्योंकि असी गुरु ग्रंथ साहब का सलोक
गुरु जी बानी है, कीरत करो नाम छुपो वन छुपो, गरीब का मुंह गुरु की गोलक, मानुष मात्र भगवान, इंसान दिल ही वाई बस रहे हैं, घट घट में हर तू वसे संतर कहो पुकार, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਸੇਮ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸੈਕਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾ ਭਾਈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੋਡ ਵੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਜਗਦੀਪ ਸਰਕਲ ਵੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 से ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਏਜ 65+ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ का ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दान सिंह जी जिन्होंने साड़ी बेनती प्रवान करके हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास हमारे इस समय में इस कोरोना के पीरियड में भी हमारे साथ खड़े होने के लिए आए हैं, अपना हर सहायता देने के लिए वो हमारे पास आए हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो कृपा से आए। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਮੂੜੀਆ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੇਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ। गोविंदनगर में ऐसा ही एक प्रोग्राम रखा गया था, उसमें भी हम उपस्थित थे। आज के समय में सारी सामाजिक संस्थाएं कोरोना काल में लोगों को सहायता करने के लिए लगा हुआ। मुझे अच्छा लगता है रोज 2-4 कार्यक्रम ऐसा हम कर रहे हैं। अलग अलग समाज के अलग अलग वर्ग के लोग जितना हो सके उतना मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अपने लिए तो सब जीता है, अपने बच्चों के लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, लेकिन समाज के लिए जो जिंदा है, जो लोग इस कोरोना काल में खा नहीं सकते हैं, दवा नहीं मिल सकती है, उसको सहायता करना यह बहुत बड़ी बात है। और हमारे धर्म ग्रंथ में इसकी बहुत व्याख्या की गई है। जो असहाय लोग हैं वो भगवान के रूप में है। हमारा धर्म कहता है इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे अच्छा लगता है सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी और वेलफेयर सोसाइटी जो सिख भाइयों का है, दोनों मिलकर के यह कार्य कर रहे हैं। निरसा से चल करके हमारे सिख भाई प्रोग्राम आए हुए, आसनसोल से लोग आए हुए, पानागढ़ से लोग, वर्धमान से लोग आ रहे हैं। क्या स्वार्थ अंदर? स्वार्थ एक ही है कि समाज को हमको सेवा करना है, गरीब लोगों को मदद करना है, और मैं उस काम को पूरा करने का प्रयास करूंगा। ये मेरे तरफ से जरूर प्रयास है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि और हमारा रूटीन कार्यक्रम में जाना है, इसलिए आप लोगों से अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद सिंह जी, सहयोग से वो भी हम पूरा करने में सफल हो गए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री नमो जवान भी हो
इनकी बातों में जो हमें तो जो है उसके बाद भी टेलीफोन में भी ये जो है कभी नहीं भूले और में भी कह करके कि तरसीम जी सत श्री अकाल, आपका आशीर्वाद चाहिए। इनके सब समय जो है लफ्ज जो है ये मुझे काफी इनके पास जाने में मदद की है। इसके आगे की भी बात अगर कहें तो इनके साथ में हमें काम करने का भी जो है इस इलाके में बहुत ही मौका भी मिला है। अपने प्रोग्राम को शॉर्ट करते हुए हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं, तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में 27 गुरुद्वारे हैं, 23 गुरुद्वारों को मिला करके हमारी एक जो है संस्था जो 2012 से बनी हुई है और उसका जो है रिवीजन होते हुए तीसरी बार रिवीजन हुआ है और उसमें जो है हमारे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उसका 1 अप्रैल को नया चुनाव हुआ, जिसमें सरदार जगजीत सिंह जी जो हैं वो प्रेसिडेंट चुने गए। तो इस पूरे इलाके में जो है सेंट्रल गुरुद्वारा 23 गुरुद्वारा का बन करके और उसमें जो है हमारे प्रतिनिधि के रूप में आपको ये भी बताने में मुझे अपार खुशी भी महसूस हो रही है कि ये संस्था सिर्फ जो है बंगाल को ही रिप्रेजेंट नहीं करती। हमारे बीच में आपके सामने श्री मंजीत सिंह, सरदार मंजीत सिंह जो कि झारखंड से आए हुए हैं और हमारे बीच में सभी कामों में कभी भी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ये स्पोक्समैन भी हैं और जो है सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या सिख वेलफेयर कमेटी का कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें ये और बगल में हमारे निर्मल सिंह जी, निम्मा जी जिनको बोल के बोलते हैं, वो कोमाडोवी से पहुंचे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ जो पहुंचे हैं वो सिर्फ जो है आपके बंगाल के भी नहीं है, कोमाडोवी झारखंड और जो है पिछले दिन जो है प्रोग्राम जो हुआ था उसमें बर्दवान और जो है और भी सभी जगह से लोग आकर के हमें जो है सहयोग किए हैं। हमारे बीच में आपको नरेंद्र आपको बताते हुए कि हमारे बीच में संजीत सिंह मक्कड़ बोल के जो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और इसमें सिख वेलफेयर सोसाइटी के वो जो है फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। उनका भी जो है इसमें सेवा में काफी अग्रणी रोल है। इसके सिवा और भी जो है हमारे इलाके से सभी गुरुद्वारा से सरदार लखा सिंह जमुड़िया से आए हुए हैं और जो है हमारे बीच में वैसे जो है सरदार स्वर्ण सिंह, इन सबका भी जो है हमें सब समय योगदान जो है मिलता रहा है। गायघाटा गुरुद्वारा से और भी जो है सोना सिंह वगैरह ये लोग भी जो है ये कमेटी से जुड़े हुए हैं। इस पूरे इलाके की जो कमेटी है तो उसमें मुझे जो है उसमें जनरल सेक्रेटरी की सेवा है और मैं आपके साथ में आगे भी बहुत काम किया हूँ और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस इलाके की जो जरूरत थी वो जरूरत हम लोगों ने पाई है और जो है आपके साथ संगत थी उनका जो ब्रांड सपोर्ट आपके साथ था और आगे आने वाले समय में भी आपके साथ रहेगा। एक चीज आपको इस मौके पर मुझे बताने में कोई संकोच भी नहीं है कि फाउंडेशन के पहले विधायक साहब कुछ जगह पर जो है कुछ चीजें कह करके आश्वासन दे करके और ये भी कहते हुए कि मैं वो कर दूंगा वो भी कर दूंगा। इस गुरुद्वारा में भी जो है उन्होंने नापी भी करवा दिया, सभी कुछ करवा दिया, लेकिन नरेंद्र आपको बताने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं एक ईंट भी नहीं लगी। इसी तरह गुरुद्वारा गायघाटा में भी उन्होंने जो है सैंक्शन किया, नोटिस सैंक्शन किया, सभी कुछ बोला कि जो है उसको 1 महीने के अंदर बन जाएगा, वहां भी कुछ नहीं किया। तो हम लोग ज्यादा कुछ आपसे कभी नहीं चाहेंगे, जो जहां जरूरत हो उसमें जो है आपका सब समय मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको पाते रहे हैं और पाते रहेंगे और ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि इसके बाद जो है हम लोग गुरुद्वारा गायघाटा में नीडी पर्सन जितने लोग हैं उनको जो है वहां भी हम लोग राशन का जो सेवा करते हैं। ये भी आपको बताने में मुझे कि 1/4 से लेकर के जब से जो है ये कोविड का जो है ये दौर चला था, सिख वेलफेयर सोसाइटी और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दोनों मिल करके जहां जहां जिसको गैस सिलेंडर की जरूरत थी उसे गैस सिलेंडर, दवाइयां और जो है रसद, जहां जहां यहाँ तक भी
ਬਹੁਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਂਡੇਸਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ भी किया गया। के द्वारा की गई कमिटमेंट भी उन्हीं के द्वारा पूरी होगी, हम अच्छी तरह से जानते हैं और वो हमारे अपने उनमें अपना पूरा सहयोग देंगे। और ये हमारे नौजवानों की तरफ से हमारे सामने उपस्थित एक बख्शीश शिरोपा जो कि सिख समाज की सबसे उत्तम अवार्ड है, उनसे निवारण है। बहुला गुरुद्वारा कमिटी এবং ঝাড়খণ্ড থেকে যারা এসেছেন গুরুদ্বারা প্রবন্ধন কমিটি যারা কর্তা ব্যক্তি আছেন, নিরসা থেকে এসেছেন, আসানসোল থেকে এসেছেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের প্রত্যেককে পাণ্ডবেশ্বর শিখ সমাজ এবং পাণ্ডবেশ্বর সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। গুরু গ্রন্থ সাহেব আমার প্রণাম জানাই। আমার গার্জিয়ান, আমার পরম মিত্র, একসময় একসঙ্গে আমরা একই সঙ্গে রাজনীতি করেছি, দর্শন সিংজি আমার অভিভাবক। তার অনেক সুযোগ সুবিধা আমার পাশে থেকেছেন, নির্বাচনের সময়ও পর্দার আড়াল থেকেও আমার জন্য অনেক সাহায্য করেছেন। এবং সর্বোপরি ব্যাপার হলো যে সারা ভারতবর্ষে আজ সমস্ত শিখ সমাজ সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আমরা দেখেছি যে দিল্লিতে কৃষক আন্দোলন, দিল্লির যে সরকার তারা কিভাবে দিনের পর দিন মানুষের উপর অত্যাচার করছে। আজ শুধু পাঞ্জাব নয়, হরিয়ানা নয়, সারা ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবীর সমস্ত শিখ সমাজ এই লড়াইয়ে সামিল হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিকায়তজিকে আমরা দেখেছি যে বাংলাতে যেখানে দরকার হয়েছে তিনি সেখানেই পৌঁছেছেন এবং আমাদের সমর্থনে সফল করেছেন। আমাদের নিজেদের এলাকাতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং দিল্লির উপকণ্ঠে যে কৃষকরা লড়াই করছেন নিজের দেশকে বাঁচাবার জন্য, নিজের জমিকে বাঁচাবার জন্য, নিজের ফসলকে বাঁচাবার জন্য, তার সমর্থনে আমরাও পাণ্ডবেশ্বরে ট্রাক্টর র্যালি করেছি এবং একথা জানান দিয়েছি যে সারা পৃথিবীর শিখ সমাজের সঙ্গে বাংলার বাঙালিরাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বে। আমরা ভগৎ সিং এর আত্মত্যাগ দেখেছি ভারতবর্ষের স্বাধীনতায়। আমরা শিখ সমাজ বরাবর লড়াইয়ের আগে থাকেন। পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ভারতবর্ষের অহংকার, ভারতবর্ষের গর্ব। তেমনি এই লড়াইও হতে হব আমরা নিশ্চিত। আর বহুলার যারা শিখ সমাজ আছেন তাদের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। আমরা এখানে যে দেখাশোনা করে যারা, তাদের সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক। আমাদের প্রধান যখন এই প্রস্তাব দেন কমিউনিটি সেন্টারের দরকার আছে,
तो करेंगे नहीं। तुम बोला कुछ पहले না আপনি বলে দেন আপনি ফাইনাল আমরা 7 লাখ টাকা আপনাদেরকে বলছি যে এই রাস্তার টেন্ডার হয়ে গেছে। 7 লাখ হ্যাঁ, রাস্তার টেন্ডার হয়ে গেছে এবং একটু আগে দর্শন সিং জি বলছিলেন দুঃখের সঙ্গে যে নেতারা আসে আর বলে যায় কাজ কিন্তু হয় না, এই নেতাদের দোষ আছে। কিন্তু আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক, দিদির সঙ্গে আমিও আছি, আপনিও আছেন, আপনারাও আছেন। দিদির কথা হলে যেখানে কথা দিয়ে আসবে সেখানে কাজ করতে হবে। 7 লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে স্যাংশন হয়েছে। সেই জায়গায় আমি প্রধানকে অনুরোধ করব যে আগামী 15 দিনের মধ্যে এই ভূমি পূজন এবং ফাউন্ডেশন লে শুরু করে আমরা কাজ শুরু করে দেবো। बोले सोनिया ডাক্তার সাহেব কি সাক্ষী রইলেন, দেবতার সামনে দুটো মিথ্যা কথা বলে না। এই কমিউনিটি সেন্টারকে সাজাবার জন্য, শিখ সংস্কৃতিতে সাজাবার জন্য যা যা প্রয়োজন আমি আপনাদের পাশে থাকবো, কথা দিলাম। আর যে কোনো প্রয়োজনে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা ছাড়াও এই এলাকার শিখ সমাজ যেখানে অসুবিধায় পড়বেন, যেখানে প্রয়োজন বোধ করবেন, সুখে দুঃখে আমাকে ডাকবেন, আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। আর আপনাদের এই আতিথেয়তা, আপনাদের এই ডাক আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আপনাদের শুভেচ্ছায়, কারণ আপনাদের দয়ায়, আপনাদের ডাকে, আপনাদের আশীর্বাদে আমি পরম পবিত্র গ্রন্থ সাহেবের মাথা ঠেকাতে পেরেছি। আমি जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो कमेटी के लोग हैं, सबको बहुला ग्राम पंचायत के प्यार है, मोहब्बत है। और हम लोग के बीच में विधायक जी जो बोलना था, विधायक जी बोल दिए हैं। विधायक जी आप लोग के सामने जो अपना बात रखे हैं, वादा किए हैं, उसका पूरा करने का चेष्टा है। ये बहुला ग्राम पंचायत के प्रधान से जाकर मैं संपूर्ण करूँगा और विधायक जी को ला के 15 दिन के अंदर में, मैं आशा करूँगा 10 दिन के अंदर में ये काम को संपूर्ण किया जाएगा। और विधायक जी का माध्यम से काम करके विधायक जी से चिंता करा के काम को हम लोग पूरा करेंगे। सबको धन्यवाद जनाब। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਈਘਾਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਖੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਖੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋੜਵੰਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਖੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਸਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बिरसा कुमार डुब्बी नाल वेस्ट बंगाल आउट ऑफ कलकत्ता
27 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ 23 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਗਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੈਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਨੰਦ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਰਸਾ ਕੁਮਾਰ ਡੁਬੀ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਾ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਫੜੋ ਰਾਜੇ, ਫੜੋ ਯਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਓਖੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀਰ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਮਾਰ ਡੁੱਬੀ, ਨਿਰਸਾ, ਜਮੁੜੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਓਖੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਖੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੀਡੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਉਕੜੇ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ 22 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਸਕ ਹੋਇਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।